guys, thanks for tuning in to My Bollywood Body. मैं आपका host Sunny. Chest routine. Let's train our chest today. Simple workout, you know, beginners भी कर सकते हैं. And if you've been training for 6-8 months, आपको complaint है यार आपकी chest नहीं grow हो रही. Let's work it out. You know, one of the key principles in gaining weight, one of the key principles in building a solid body is lifting weights. How heavy can you lift? So barbell press, छाती चौड़ी करके चौड़ी छाती, you know, this is the exercise you gotta do. कितने सेट करने हैं, कितने रेपिटेशन करने हैं, मैं throughout workout आपके साथ शेयर करूंगा. Try to finish. We're gonna do about 6 to 7 exercises in this workout. We have our Johnny bhai here, लंबे पे हुए हैं पहले से ही bench के ऊपर. So we're gonna start off with the bench press. The first exercise इसके मैं चाहता हूँ आप 4 सेट करें, 10 से 12 रेपिटेशन पहले में और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रेपिटेशन गिराना शुरू कर दें, depending on how much weight you can put on. So at the last set, which is your fourth set, I want you to only do 4 to 6. So start off. This is your first. पहला आप तो सेट करें, उसके अंदर 10 up to 12 चले जाएं. Keep adding weight. 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10, 20, 50 किलो, जितना आप डाल सकते हैं. आपने ये एम रखना है कि जो आपका चौथा आखिरी सेट है उसके अंदर you only doing 4 to 6 repetitions. So this is the first exercise you're doing. The first exercise is barbell presses. So you go down, touch to your nipples, come all the way back up. I want you to do 10 to 12 repetitions in the first set. And you're gonna pair it up with a superset of push-ups. So you do a barbell press, पहली 10 से 12 रेपिटेशन का पहला सेट किया और superset with push-ups. So जितने रेपिटेशन वहाँ पे किए, अगर आपने बेंच के ऊपर 12 रेप लगाए हैं, आपने 12 पुशअप करने हैं. उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है. ये दो different exercises नहीं है, they are combined together, they are paired together. It's called a superset. So starting off here, 10 से 12 रेपिटेशन पहले सेट में लगाए, 10 से 12 आपने पुशअप लगाए, ब्रेक ली, दूसरा सेट लगाया, उसके साथ पुशअप लगाया, तीसरा सेट लगाया, उसके साथ पुशअप लगाया. So we're not doing any dumbbells. So we're gonna work on volume. So volume, उधर हमने volume ऐड करना है और यहाँ पे हमने instead of dumbbells, the whole idea is again, अगर आप बार लगाते हैं उसके बाद dumbbells लगाते हैं, you get tired by the time you get into 5th, 6th exercise, आपकी वैसी बस हुई होती है. So एक exercise के ऊपर concentrate करो जिसके ऊपर आप ज़्यादा weight लगा सकते हो. Moving on, you know, drop set with push-up. So that's your first exercise. 4 set करने हैं. Moving on to our second exercise. तो पहले हमने फ्लैट बेंच लगाया, सेंटर से चेस्ट को टारगेट किया. मूविंग ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज, हमने इंक्लाइन बेंच लगाना है, व्हिच इज टारगेटिंग द अपर पार्ट ऑफ योर चेस्ट. अपनी कॉलर बोन के ऊपर जिस पे आप अपनी बार टच करते हो. सेम, गो ऑल द वे नाइस एंड स्लो. आप अपनी मूवमेंट देखो, इट हैज टू बी वेरी नाइस एंड स्लो. ये नहीं कि पागल दंदरांगो सी चक्की जाना मोटा खराब कर लेना. यू गो डाउन नाइस एंड स्लो, पॉज एट द नीचे जाएं, हियर यू गो, पॉज, ब्रिंग इट ऑल द वे बैक अप. अगेन 4 सेट. पहला सेट जो है आपने 10 से 12 रेपिटेशन का लगाना है, फिर बेशक 8 का लगाओ, 6 का, और एट द एंड आई वांट यू टू डू 4 to 6. So पहला सेट आपने 10 से 12 का लगाया. अगेन जिस तरह आपने फ्लैट बेंच के साथ किया था, pair it up with superset it up with push-ups. सेम, अगर आपने इंक्लाइन लगाई है 10 से 12, साथ में राइट अवे वहां पे आपने बेंच ड्रॉप किया, राइट अवे आपने 10 से 12 यहाँ पे पुशअप लगाने हैं. इसके भी आपने उसी तरह नाइस एंड स्लो. यू गो डाउन, स्ट्रेच योर चेस्ट, कम बैक अप, एंड व्हेन यू कमिंग बैक अप, कीप द टेंशन ऑन योर चेस्ट. इट्स लाइक ये आप नीचे गए, समझो हाथ, आप किसी ने हाथ रखा है, यू पुशिंग द हैंड अवे यूजिंग योर चेस्ट, नॉट शोल्डर, नॉट आर्म, यूजिंग योर चेस्ट, यू पुशिंग इट अवे, यू स्क्वीजिंग योर चेस्ट मसल. पहली एक्सरसाइज फ्लैट बेंच, सुपरसेट विद पुशअप. सेकंड एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच, सुपरसेट विद पुशअप. 4 सेट, पहले 10 से 12, फिर 8, 6 और आखिरी में 4 से 6. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो द थर्ड एक्सरसाइज वी आर डूइंग, पहले हमने फ्लैट बेंच से लगाया, फिर मूविंग ऑन टू इंक्लाइन. द थर्ड एक्सरसाइज वी आर डूइंग इज कॉल्ड अ पेक टैक. हर मशीन में पेक टैक, इट्स वन ऑफ द, हर बंदे की इट्स अ फेवरेट मशीन, टारगेट्स द सेंटर पार्ट ऑफ योर चेस्ट. बट इसके भी हमने 3 डिफरेंट ग्रिप्स यूज करनी है. सबसे पहले वी आर गोना टारगेट द डिक्लाइन पार्ट, देन वी आर गोना टारगेट सेंटर, एंड देन वी आर गोना टारगेट इंक्लाइन. 6 सेट टोटल लगाने, 2 डिक्लाइन, 2 सेंटर, 2 इंक्लाइन, 10 से 12 रेपिटेशन रखने. सो पहली एक्सरसाइज. सो हाउ यू नो दैट यू वर्किंग ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर चेस्ट. आई डोंट वांट यू टू सिट. आपने बैठना नहीं है, आपने खड़े होना है और अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है. एंड देन डू कपल ऑफ रेप्स एंड यू विल फील इट कि कहाँ पे आपकी बार यूज होती है. सो इफ योर हैंड्स आर कमिंग जस्ट बिलो योर निपल्स, you see his hands are below his nipples, you'll actually feel it in the lower part of his chest. अगर आपके हाथ जब बंद होते हैं, जब squeeze होते हैं, and they're under your chest, you're targeting the lower part of your chest. अपनी छाती के नीचे का हिस्सा यूज कर रहे हो. पहले आपने इसके 2 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन. नाइस एंड स्लो. लुक, झटके नहीं मार रहे, यूं नहीं कर रहे. इट्स नाइस, स्ट्रेच, let the blood and oxygen in there. नाइस, स्लो करें, ब्रीथ आउट, ब्रिंग इट बैक. 10 to 12 रेपिटेशन. 2 सेट इसके लगाने हैं. When your 2 sets are done, you're going to take a break, so that becomes 1 exercise. Now I want you to take like a, you know, in his case, he's the model, so he's only going to take a 10-second break. But in your case, take a longer break, recover, because again, volume, you're adding weight. You're not doing 5-10 kilo. It's a heavy weight, 10 to 12 repetition. You're really squeezing the muscle. 2 आपने इधर किए. Now we're going to target 2 center part of your chest. So in his case, he can adjust. You don't really have to. अगर आपकी सीट adjust नहीं होती, that's even better, because you can just stand up and down, come up a little bit. That's good enough. So now आपके जो हाथ हैं अगले 2 सेट में छाती के सेंटर में आने चाहिए. Let's go.
परफेक्ट। सी पहले उनके जो 2 सेट थे उसके अंदर उनके हाथ जो है वो छाती के नीचे थे, टारगेटिंग द लोअर पार्ट ऑफ योर चेस्ट। नाउ यू आर टारगेटिंग द सेंटर पार्ट ऑफ योर चेस्ट। इसके भी आपने 2 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन। मूविंग ऑन टू द लास्ट 2 सेट्स जिसमें आपने अपने इंक्लाइन को करना है। So now again the same thing, same machine के ऊपर same exercise. Now when you're doing it, आपके जो हाथ हैं they are parallel. आपके जो इधर ये वाली जो हड्डी है कॉलर बोन है उसके पैरेलल आने चाहिए. So you're actually targeting the upper part of chest. एक मशीन को आप different एंगल से different exercises के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट अपनी छाती के पार्ट को यूज कर सकते हैं. 10 से 12 रेपिटेशन, पहले डिक्लाइन के 10 से 12 रेपिटेशन 2 सेट, फिर सेंटर के 2 सेट 10 से 12 रेपिटेशन, और आखिर में आपने इंक्लाइन के किए 10 से 12 रेपिटेशन 2 सेट. मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज. ये आपने पहले अगेन विल स्टार्ट ऑफ विद, सबसे पहले आपने फ्लैट बेंच किया, उसके साथ सुपर सेट पुशअप लगाए, इंक्लाइन बेंच किया, सुपर सेट पुशअप लगाए, 2 डिक्लाइन पेक टेक, 2 सेंटर में प्लेक टेक और 2 इंक्लाइन के ऊपर. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे. Moving on to the last exercise of the day, German volume. German volume आप गूगल कर सकते हैं, what is German volume. किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप किसी की बस कराना चाहते हैं, add a lot of volume, add a lot of sets, a lot of repetition, it's called German volume. So आखिरी एक्सरसाइज जो आपने करनी है, it's called German volume push-ups, 10 by 10. आपने 10 सेट लगाने हैं 10 push-up के with 30-second break. So Johnny bhai, I want you to start off. This is your last exercise. So you do 10 push-ups. 1, come on, pick up speed. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Take a break, 30 seconds. So now this is your last exercise. You do 10 push-ups, 30-second break, 10 push-ups, 30-second break, all the way up to 10. Let's say आपने 2-4 सेट तो लगा लिए, you're good, and you cannot do it. आपके छाती के, आपके शोल्डर में, ट्राइसेप्स में दर्द शुरू हो गए, put your knees down. अपने घुटने नीचे लगा के you keep doing. You gotta finish off your set. So put your knees down, Johnny buddy. Here you go. Nice and slow. Maintain your speed. Stretch your chest. Get the blood and oxygen in there. जितना आप stretch करेंगे, जितना muscle fibers को tear करेंगे, break करेंगे, उतना आपके लिए beneficial है. 10 by 10. 10 push-ups and 10 sets, 30-second break. Again, let's wrap it up. Flat bench, 4 सेट, पहले 10 से 12 रेपिटेशन, फिर 10, 8, 4 से 6. साथ में आपने सुपर सेट करना है. तो 10 से 12 अगर फ्लैट पे किया, राइट अवे 10 पुशअप्स किए, 10 to 12 पुशअप किए, इस तरह 4 सेट उसके लगाए, 4 आपने इंक्लाइन के लगाए, सेट साथ में उसके साथ सुपर सेट विद पुशअप. मूविंग ऑन टू पेक टेक, 2 डिक्लाइन, 2 सेंटर के लिए, 2 इंक्लाइन के लिए, एंड रैप इट अप विद 10 by 10 जर्मन वॉल्यूम पुशअप. 10 सेट, 10 repetition के push-ups with 30-second breaks. If you're training alone, you should be able to knock it off in about 45 minutes to 50. अगर आपके साथ आपका कोई partner है, you'll knock it off in about an hour to hour 10 minutes. Make sure eating well. Make sure you're hydrated. Drink enough water before and after workout. Carb up because you're lifting heavy weights. Thank you, Johnny bhai, for your effort, and they're on fire. That's what you said in the break. Make sure you subscribe to our YouTube channel, My Bollywood Body. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. Dhanyawad.